So I again welcome you all in this particular session. So without getting much into it, so I like to start with one story of my life. When I was giving PMT, so I was stuck with physics and chemistry. So that time that thought came in my mind, if I am not able to clear those subjects, so I won't be able to crack the exam. Yes. So जस्ट वन थॉट केम इन माई माइंड कि लोग ही है ना जो कर रहे हैं मुझे बहुत आई वॉज वेरी टाइट इन दैट पोजिशन आई वॉज नॉट एबल टू डू द गुड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पर्टिकुलरली बट विद दैट थॉट कि लोग ही हैं ना जो कर रहे हैं मैं क्यों नहीं कर सकता तो आई स्टार्टेड डे एंड नाइट वर्किंग ओवर इट and within a span of 2 years because 12th and one drop I was able to crack that exam and I got more marks than the people who helped me to work on physics and chemistry. That was just thought, this was just a mindset which I tweaked, which I changed, and I changed the situation. So this is one example. Because of that, and coming into contact with this spiritual organization, I thought that I have to work for the people जो कुछ scarcity mindset से कि मैं नहीं कर सकता. Scarcity mindset is मेरे पास enough resources नहीं है, मेरे पास enough options नहीं है. So these are all scarcity mindset things. और हम हमेशा सुनते हैं आसपास मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे को कोई हेल्प नहीं करता. तो अगर ये हैं बातें तो दैट मीन्स आई एम सफरिंग फ्रॉम स्कैरसिटी माइंडसेट और इसकी मेडिसिन किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है टेल यू सो आई हैव टू वर्क फॉर इट वेयर आई वर्कड सो तो scarcity mentality refers to people seeing life as a finite pie so that if one person takes a big that leaves the less for the other one समझ पा रहे हैं इट्स अ माइंडसेट मेंटालिटी जिसमें हमें लगता है कि थोड़ा है हमारे पास अगर कोई ज्यादा ले लेगा तो मेरे लिए थोड़ा बचने वाला है बट अगर हम आसपास देखें हर चीज भरपूरता में है हमने नेचर को चीजों को एक्सप्लॉइट किया है दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट बट नेचर ने हमें सब कुछ भरपूरता में दिया है आप देखिए इवन वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ इट वी आर ब्रीदिंग डे एंड नाइट टुगेदर दैट ऑक्सीजन इज इन अबंडेंस भरपूरता में है भले ही कहीं पानी कम है बट स्टिल नेचर हैज गिवन सो मेनी थिंग्स इन अबंडेंस बट हम क्या है हम अपनी संकुचित मानसिकता की वजह से इट्स बिकॉज ऑफ सम पास्ट एक्सपीरियंस मे बी दिस बर्थ और एनी अदर बर्थ वी गेट इन टू दैट जोन ऑफ स्कैरसिटी कि हमारे पास नहीं है और we continuously create stories around it and we create that belief system stronger and stronger day by day so scarcity mindset is when you believe that there are limited resources जैसे मेरे को मदद नहीं करता मेरे पास है ही नहीं है फैमिली वाले मेरी मेरी हेल्थ नहीं है continuously thinking about that and feel that less resources available for you a scarcity mindset is when you obsess over what you lack whether it's time money or something else it's a different aspect क्या हम हमेशा उस चीज के लेकर ऑब्सेस हो जाते हैं कि मेरे पास नहीं है कोई चीज तो आप सोचिए हो सकता है 10 चीज नहीं है पर 4 चीज तो होंगी ना ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास नहीं है कुछ भी तो abundance is about focusing on the things which you have and scarcity is about more obsession to the things which you don't have गाड़ी तो है पर वो नहीं है जो पड़ोसी के पास है something like that very common example so abundance is I have enough provided if you are able to focus on the things which you have it's only about your focus so अब काम हमें क्या करना है how this journey will go this is about 3 areas where we have to work one is mindset मेरा mind कहाँ set है is it in abundance or it is in scarcity the next thing come will skill set कि मुझे particular x goal की तरफ जाना है तो उसके लिए मुझे what skills I require I have to incorporate that in my life अब आपके पास mindset भी है skill set भी है but to achieve those goals we have to take actions also because even in law of attraction there is hidden law of action also if I don't take action the things won't work in the way I am thinking जैसे एक एवरीडे एक पर्सन भगवान से मांग रहा है कि भगवान मेरी लॉटरी लगा दो बट भगवान एक दिन प्रकट होके बोलते हैं कि भाई लॉटरी का टिकट तो तुझे लेना पड़ेगा देन लॉटरी निकलेगी सिमिलर थिंग if we are practicing law of attraction also or any other thing but if I don't take action towards my goals
I won't be able to achieve those goals. As simple as that. So this is the steps towards journey from scarcity to abundance. 3 लेवल पर हम काम करने वाले. So the step number 1 is abundant mindset. मैंने पहले ही कहा mindset is about where my mind is set, where most of the thoughts are being generated. जिस लेवल पर अगर रेगुलरली आई एम क्रिएटिंग थॉट्स अराउंड कि मेरे पास नहीं है या मैं नहीं कर सकता, जो मैं पहले कर रहा था व्हेन आई वाज स्टक विद माय फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. बट द मोमेंट आई स्टार्टेड थिंकिंग के क्यों नहीं कर सकते, देयर आर सो मेनी अदर पीपल जो कर रहे हैं, और अगर इसके लिए मुझे और क्लैरिटी चाहिए तो आई गिव यू वन वन गोल्डन नगेट कि इफ आई एम स्टक विद माय माइंडसेट आई कैन रेफर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. ऐसे ऐसे काम लोगों ने किए हुए हैं जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते, एंड दोज आर ह्यूमन बीइंग. कोई भगवान नहीं है, इंसान ही वो कार्य कर रहा है, बट हम स्टक हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है. मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज वी क्रिएट स्टोरीज अराउंड इट. हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी हम परफॉर्म नहीं कर पाते. आई टेल यू वन स्टोरी अबाउट इट. वन ऑफ माई फ्रेंड वाज इन यूके, स्टक विद वन एग्जाम. फाइनल एग्जाम के लिए 4 साल ही वर्क फॉर इट, बट ही वॉज नॉट एबल टू क्रैक दैट एग्जाम. सब प्रिपरेशन सब कुछ, बट जस्ट बिफोर एग्जाम गेट इन टू दैट स्कैरसिटी जोन के मैं नहीं कर सकता, नहीं होगा तो क्या होगा. दिस इज ऑल वी डू. बट when we talked about it कि कहाँ रीजन है, कहाँ गड़बड़ी हो रही, why he is not able to get through the exam. Preparation was full, knowledge was full, everything was there, and within a span of 1 year he was able to get through that exam, just working on the mindset. This is the place where we have to work. Instead of creating stories around our problems and shortcomings, we have to create stories around the things which we have. तो अबंडेंस माइंडसेट में हमारे को 3 चीजों पर विशेष कार्य करना है. ये मेरे 6G में से 3Gs ये भी हैं. वन इज गोल्स, द अनदर वन इज ग्रेटिट्यूड, एंड थर्ड वन इज ग्रेटनेस. तो गोल्स के लिए मुझे जहां पर भी जाना है, आई हैव टू क्रिएट गोल्स. अगर मेरे पास लक्ष्य ही नहीं है, मुझे जाना कहाँ है, तो मैं पहुंचूंगा कहाँ. आप घर से निकलें और आपके पास कोई क्लियर कट लक्ष्य नहीं हो, आप पहुंचेंगे ही नहीं. बस निकल गए, कहीं भी जाना है. सिमिलरली दिस प्रिंसिपल अप्लाइज इन अवर लाइफ. मुझे जहां जाना है, मेरा लक्ष्य मुझे निर्धारित करना पड़ेगा. आई हैव टू क्लियरली डिफाइन माई गोल्स, देन आई विल बी एबल टू वर्क फॉर इट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. तो ये माइंडसेट पे ही होगा काम. मुझे माइंड को सेट करना पड़ेगा अपने गोल्स के अराउंड. इंस्टेड ऑफ focusing on scarcity, I have to focus it on goals. The another one is the gratitude. Gratitude is saying thanks for the things which you have. धन्यवाद का नजरिया. It will shift your focus, your mindset from the things of lacking something towards the things which you have. जैसे अभी मेरे पास नहीं है, मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मेरा हेल्थ काम नहीं करता है. आप सोचिए, आई गिव यू वन एग्जांपल. अगर मैं ये कहूं कि मेरा हेल्थ काम नहीं कर रहा है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, इफ सपोज मुझे जान बचाने के लिए भागना पड़े तो कितनी तेज में भाग पाऊंगा. गेटिंग फाइन. इट्स अ मैटर ऑफ माइंडसेट ओनली. अगर आपके पीछे कुछ मारने के लिए लग जाए आपको, तो कितना स्पीड से आप भागने वाले हैं जस्ट टू सेव लाइफ. इट्स अ मैटर ऑफ माइंडसेट. So if I focus on the things which we have and say thanks to the Supreme for giving me those things, my focus will shift from scarcity to abundance. This is the biggest thing which we can do. Every day say thanks to Supreme, say thanks to parents, thanks to teachers, thanks to body, thanks to these gadgets. अब आप सोचिए, गैजेट्स हैं तो हम बात कर पा रहे हैं दूर बैठकर भी. वी आर एबल टू लर्न न्यू थिंग्स. से थैंक्स टू ईच एंड एवरीथिंग. यस. से थैंक्स टू योर व्हीकल्स. से थैंक्स टू योर सपोर्ट सिस्टम, सबॉर्डिनेट्स, योर कलीग्स, योर सीनियर्स, ईच एंड एवरीवन. अब आप सोचिए, जिंदगी भर कितनी कैसी आयरनी है कि जिंदगी भर हम उस जॉब से दाल रोटी कमाते हैं, बट होल लाइफ हम उस जॉब को कर्ज करते रहते हैं. वो हम उसको बोलते रहते हैं, मेरा जॉब भी खराब है, प्रॉब्लम है, ये है ये. In spite of getting so many things out of it, we are not able to say thanks for that. I know so many, even my seniors teachers, I have seen so many people, whole life, very good thing, everything, जिसके लिए लोग ड्रीम देख रहे हैं कि मैं ये बन जाऊं. They are at that position, but in spite of that, they are day and night saying कि मेरा जॉब खराब है. Biggest thing.
तो हाउ आई कैन इमेजिन कि मुझे अबंडेंस मिलेगी, भरपूरता मिलेगी, इफ आई एम नॉट सेइंग थैंक्स टू इट. Say thanks to it. For no reason, say thanks to it. And even in scriptures, it has been mentioned कि जो धन्यवाद का नजरिया अपनाते हैं उनको और ज्यादा दिया जाता है जिसके लिए वो धन्यवाद कर रहे हैं, और जो धन्यवाद नहीं देते उनसे वो भी ले लिया जाता है जो उनके पास है. So I'm not going into that much of detail. Focus on that. Start from today itself. अगर आप धन्यवाद देते हैं तो बहुत अच्छा है, मुबारक है. बट अगर नहीं, स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, से थैंक्स. आसपास कम से कम फैमिली मेंबर्स को थैंक्स बोलिए. कभी हम थैंक्स नहीं बोलते फॉर नो रीजन. आप करके देखिए, दिस विल चेंज एवरीथिंग अराउंड यू, एवरीथिंग अराउंड यू. आई आई कैन राइट इट, मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको. यस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. The final thing is the greatness. It is an important aspect of our life. अब आप सोचिए, मंदिर, अभी देवियों के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि. हम क्या कह रहे हैं? माँ दुर्गा. माँ मीन्स मदर. यस. तो मदर इज एट सच अ लेवल कि पूरी दुनिया को बांट रही है, और हम बच्चे, हम भिखारी मांग के बन के मांग रहे हैं, मुझे दो, ये सुख दो, शांति दो. ये अच्छे से बोले तो मैं बोलूंगा. वाई? वी आर फॉरगेटिंग आवर ग्रेटनेस. मीन्स अगर मैं याद रखूं कि मैं जिसके सामने गा रहा हूं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मैं उसकी संतान हूं. मैं साधारण नहीं हूं, कमजोर नहीं हूं, निराश हताश नहीं हूं. आई एम अ पावरफुल बीइंग. आई कैन चेंज each and every situation coming in my life. Three things at mindset level: goals, gratitude, and greatness. Clear with that? Step one, I have to work on my mindset. अब सिर्फ इतना ही सोच के रखिए कि मैं उसकी संतान हूं. अगर आप मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी की संतान नहीं है, बट अगर कोई संतान होती थी तो कितने अधिकार से बोलती थी, माय फादर इज सच एंड सच पर्सन, इजंट इट? बट हम वो भूल जाते हैं. मैं तो साधारण हूँ, निराश हूँ, कमजोर हूँ. नो, मैं उसकी संतान हूँ. जस्ट ये याद, ये माइंडसेट में फिट करना है. Automatically abundance. This is the step number one, and now the step number two is the skill set. First is mindset, the next is skill set. मुझे skills कौन सी develop करनी है? तो first thing is when you finalize your goal. जैसे मान लीजिए मेरे को डॉक्टर बनना था, डॉक्टर में मुझे क्या बनना है? तो first deciding those goals, then I will acquire the skills required for that to achieve that particular goal. तो इसमें ये हो सकता है कि एक नई स्किल मैं सीखूं. दूसरा ये हो सकता है मेरे को जो पास जो ऑलरेडी स्किल्स है, आई रीडिफाइन दोज स्किल्स. दैट कैन ऑल्सो बी वर्कड. सपोज जैसे मैं आपको बताऊं, बीइंग एन एनेस्थेटिस्ट, आई कैन either learn different skill like pain management, like ICU management, something different and related to it, or else altogether different skill. I am into personal finance, I am into life coaching. This is altogether different skill which I had developed, I learned, I experienced. Now I am teaching to the people, coaching the people. This way I can work. So for that, I have to grow. Growth. This is the fourth G in my 6G model. It is a mindset also, growth mindset, and it is about growing the self also, learning new skills and grow myself. A lot of medical professionals these days are doing LLB, getting into law, so many other things that you can learn. So learn new skills or improve or redefine the old skills which you have. जैसे कोविड के समय में बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे देख के नई नई डिशेस बनाना सीखे, बनाना शुरू किए. यस, सिमिलरली वी कैन डू दैट. सो अराउंड योर गोल, फर्स्ट इज डिफाइनिंग योर गोल, किस रास्ते पर आपको चलना है. फिर उसके लिए क्या स्किल्स की जरूरत है, दैट यू लर्न. और कुछ स्किल्स जो इम्पोर्टेंट है, हर एक को आना चाहिए. दोज आर लाइफ स्किल्स. Those skills related to how to manage our emotions, how to manage ourselves, how to manage the things around, how to manage relationships. Yes. अब आप सोचिए, I always give that example. Sri Krishna was with Arjuna in the middle of the battlefield. Arjun was Sarvasreshth Dhanurdhar at that time, but in spite of that skill which he has, he required life skill at that time, which he was lacking. जो उसके पास नहीं, जो लाइफ स्किल श्री कृष्णा ने उसको दी. सो दीज स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एम हियर टू help you out at every moment. I am helping you out. There's so many people in my community which are getting these particular services from my side, and I commit for that help to you also. So these are two things: growth and learn new skills. And the third one is generosity. ये skill भी मुझे learn करना पड़ेगा. Yes. अभी हम बहुत, मैं बात करें, scarcity means संकुचितता. आप नैरो 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 होते जा रहे हैं. But we have to develop generosity
एट दैट लेवल कि आप हर कार्य को कर सकें, किसी कार्य को छोटा समझ के नहीं, हर स्किल्स को अप्लाई करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करते जाएं, ग्रो करते जाएं डे बाय डे लेवल पर। क्लियर विद द स्टेप नंबर 2, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। एक समय के बाद वी लूज दैट कैपेबिलिटी ऑफ ग्रो आवर सेल्फ, वेरी फ्यू पीपल, बट द बेस्ट थिंग इज बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल। हमारे पास ये एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है हमारी एजुकेशन का, वी हैव CMEs अराउंड द ईयर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स, but we are lacking these life skills which where I am focusing right now. बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सीनियर मेडिकल प्रोफेशनल आर इन माय कांटेक्ट, they are struggling with their relationships. Here at Mount Abu, one couple came. Both of them were retired from their uh, HOD post, head of the department post. One of the HOD of chemistry, one of the HOD, I think some other department. Yes, both of them worked together like anything. But after retirement, आप सोचिए कि 60 साल की एज में they were thinking of getting divorce at that level. Can you imagine? पूरा लाइफ साथ में गुजारा, HOD बन के अपने डिपार्टमेंट की सेवाएं की. आफ्टर दैट व्हाट? बिकॉज ऑफ just some issues in the relationships, they were into that zone के scarcity zone, and they were thinking of getting divorced. But just one senior person talked to him and just एक nugget दिया, मैं आपको भी देता हूँ, शायद you can work on it. दोनों से पूछा कि आप क्यों चाहते हैं divorce. Both they said कि नहीं, हमें we are not able to manage the things, we want to get the things done at individual level. Because हर एक HOD अपने लेवल पर उनको ऑर्डर फॉलो होता है डिपार्टमेंट में, बट अब घर पे अब रिटायर्ड है, कौन ऑर्डर फॉलो करे, कौन किसकी माने. बिकॉज ऑफ दैट ईगो क्लैश दे वर इनटू दैट जोन. उनसे इतना ही पूछा कि क्या आप दोनों में एक दूसरे के लिए कोई क्वालिटीज नहीं है क्या? आपको क्या लगता है इनमें कोई क्वालिटी नहीं है? इन्होंने कभी मदद नहीं की क्या? उनसे पूछा एवरीबडी सेड नहीं, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत मदद भी की है. देन दे वर टोल्ड व्हाई यू वांट टू get divorced. So they started thinking, because it's a just mindset, that tweak was required. अभी लग रहा था नहीं, ये मेरी बात नहीं सुनते, वो ईगो पार्ट was there, but then the vision was got cleared कि नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो की गई हैं, शायद अभी हम नहीं देख पा रहे. So with that mindset, the everything got changed. Yes, so here we have to work. So this is the step number 2: growth, learning new skills, generosity. I like to just add one thing here. It's not just only about knowledge. जानकारी आपको बहुत सारी यहाँ वहाँ मिल जाएगी, सोशल मीडिया पर मिल जाएगी, but it's about implementation and getting results. I am interested there. मैं उस बात पे इंटरेस्टेड हूँ कि आप इस चीज को अप्लाई करें and get some results for yourself. So इसलिए मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी कि टेक नोट्स, जो आपको लगे कि आपको इम्प्लीमेंट करना है, यू टेक दैट थिंग विथ यू एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. एक तो कमिटमेंट किया, you will accept that attitude of gratitude. That is one thing I'll strictly recommend you. You should follow that. Now the final step is, this is one concept. This is called ikigai. It is a Japanese concept. Yes, उन्होंने ये देखा, ये पाया कि जो लोग काम अपना बहुत इंटरेस्ट से प्यार से करते हैं ना, दे हैव अ लॉन्गर लाइफ, दे हैव लिटिल प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ, कम प्रॉब्लम्स होती हैं. मैंने एग्जांपल दिया ना, माय सीनियर, they were struggling with their job, struggling in the sense at mental level, they were not happy. So what is this concept? These are four things. First is what you love. Yes, the next thing is what the world needs. The fourth one is what you can be paid for, and final thing is what you are good at. अब जब आपको जो अच्छा लगता है कार्य कर रहे हैं, व्हाट यू लव, एंड द सेम थिंग वर्ल्ड नीड्स आल्सो, एंड यू आर बीइंग पेड फॉर दैट आल्सो, एंड यू आर गुड एट आल्सो it also. Yes, that is the principle of ikigai. If the fourth thing is combined together, you love that work, you are good at it, and world also needs it, and you are being paid for that. तो अब इसके लिए क्या करें? अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ X, तो I always say start loving that work which you are doing. How you do it? Create some newness in that. कुछ creativity उसमें involve करें, वो creativity डालें जो आपको अच्छा लगे. जैसे I give my example. Being an anesthetist, when I give anesthesia, what I practice, I take energy from the supreme and give to the patients. That thing I love. That is into my core.
I have added into anesthesia. So anesthesia is my passion because of this particular practice. Yes. So I love that also. People need also, and I have been paid for that also. So I'll work for longer duration and get beautiful result out of it. क्योंकि बहुत सारे लोग जो काम कर रहे होते हैं ना, जैसे आप देखिए सुबह उठते में उनको जोश नहीं रहता जाने का काम पर, बिकॉज दे डोंट लव इट, दैट्स व्हाई दे डोंट गेट that much of result out of it. They are not able to attract abundance in our life because of that issue. So if all four things are there, so this is a principle called ikigai, then you will be able to live longer, stay happy, and generate more results out of it. So this is the concept which I wanted to state here. Now the final step is action set. Mean your action are set according to your goals and skills. So you have to be consistent and persistent. There is a little difference between the two. Consistent means जो आप कर रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं, consistent, and with that full energy you are persistent on it even if you are not getting results out of it. That is a thing which we have to incorporate in our life. कई बार क्या होता है, हम थोड़ा सा efforts लगाते हैं, if we are not able to generate results we get disheartened, we get into that scarcity zone कि नहीं हो सकता, नहीं होगा. But if I focus on that consistency, तो मुझे कार्य करना है. देखिए, लॉ ऑफ कर्मा सेज कि आपका छोटा मोटा कर्म भी व्यर्थ नहीं जाता है. एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हो सकता है उस समय रिएक्शन ना दिखे मेरे कार्य का. जैसे मान लीजिए वेन सर ने भी अभी अपना एक्सपीरियंस अनुभव शेयर किया. आई ऑल्सो स्टार्टेड 20 years 25 years बैक. सो दैट टाइम थिंग्स वर डिफरेंट बट आई स्टार्टेड वर्किंग. Everybody started working and every journey starts with zero. To build up the building, we have to start from the foundation and go above and above. We have to work like that. तो दोनों चीजें चाहिए मुझे actions के लिए. And for that, I mentioned you here कि my environment is more powerful than my will. This is a quote from my mentor. कि अगर मान लीजिए आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं रोज आप रेगुलरली, बट जो आपका जो फ्रेंड सर्कल है जिनके साथ आप रह रहे हैं, जिनके साथ आप मिल रहे हैं, बट दे आर नॉट दैट सीरियस अबाउट देयर हेल्थ, एक्सरसाइज, डाइट, खाओ पियो आराम से रहो, क्या फर्क पड़ता है. एक दिन आएगा आप भी उस जोन में रहकर यू विल बी चेंज्ड. योर एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर. सो टू गेट consistent result, get into that environment that aligns with your mindset, your goals. If I want to get into spirituality and I have a company of friends जो खाना पीना आराम से शाम को बैठो ड्रिंक करो, then you will be able to get results out of it. It's a very very true. So I have to take care of it. Why Pandavas won the battle? Just because of that company. कहते हैं कि अगर किसी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो, अगर आप उसकी कंपनी देख लोगे तो आप उसके बारे में जानकारी एक आइडिया लगा सकते हो कि कैसा होगा वो पर्सन. I am offering this abundance accelerator hub to each and everyone around here to create a environment around you to grow. The next step is gallop. These are हम 4G already describe कर चुके हैं. Goals, growth, gratitude, greatness. The next 2G is gallop and give back. So gallop is taking action. जैसे horse gallop करके towards his goal. So similarly, I have to gallop means overcome the situations coming in my life instead of getting stuck into the situations. जैसे aeroplane ऊपर से by air we travel, that is not affected by the traffic in the ground. But हम क्या करते हैं, कोई situation आई we get into that situation, उसका चिंतन करने लगते हैं. इसके लिए I have to take consistent action and I have to plan the things a day before. That is one habit which we practice here in our Abundance Accelerator Hub. That means you should write every day 3 actionable items in the morning and complete before sleeping so that we'll be able to reach our goals early. Start with 1, 2, 3, 4, 5, at least 20 if you are habitual of it. 20 actionable items every day. If we have 24 hours, I say 24 because मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए I am not recommending that to you कि start with at least 3. जो actions आप टाल रहे हैं बहुत समय से, जो actions आपको uncomfortable कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं उठ के खाना खाऊंगा. नो, आज मुझे सपोज कीजिए कोई कार्य करना है जो बहुत समय से टाल रहा हूँ, I'll do it before sleeping today. So that is consistency and persistence and gallop. And in galloping, we are thinking of multiple streams of income also. I'll recommend here means we should have at least 4, 5, 6, 7
as much as possible different streams of income from where we can generate income. We should think of it. So we should be able to generate some different streams of income to attract abundance in our life. And final important thing is गिविंग बैक टू द सोसाइटी, क्योंकि मुझे बनाने में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, पूरी सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है. आई हैव टू गिव बैक. और पिता परमात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि बच्चे आपको जो चाहिए लाइफ में ज्यादा वो आप देना शुरू कीजिए. द मोर यू गिव द मोर यू गेट रिटर्न. आपको हेल्थ चाहिए अच्छी, हेल्प पीपल टू रीगेन देयर हेल्थ, to achieve the healthy lifestyle, to help people. Yes, if you want more money, help people to generate more money or donate money. You can give back time, skills, resources and money to whatever cause you resonate with. अगर आपको लगता है आप एजुकेशन में काम करना चाहते हैं, go for it. If you want to work with spirituality, work with flood relief, there are so many causes, social causes are there जिससे आप resonate करते हैं. At least you should give back 10% your time, resources. If you think of, the more you give the more you get, and that is for 100% sure. This is my experience in my life. You also having similar kind of experiences. These are the basically 3 steps where we have to work: abundant mindset, the skill set and the actions. When all 3 together combine together, you'll be able to attract abundance in our life. This is the journey from scarcity to abundance. I'll request you, कुछ एक बातें जो आपको लगता है कि मुझे implement करना है, तो जरूर start from today itself. This is the irony of the life. Everywhere the things are disturbed, because if the self is disturbed, myself, I don't have goals, I don't have abundant mindset, no action plan, so that will be reflected on work, that will affect my family and friends also. So इस चीज को सारे को बैलेंस करने के लिए I have to focus on the self. अभी क्या होता है, अभी हम वर्क को ठीक करने की कोशिश करते हैं, फैमिली के लिए, मैं फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, और वी वांट के फिर मेरे लिए सब लोग करें, जो नहीं हो पाता है. तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ. आई हैव टू स्टार्ट गिविंग टाइम टू माई सेल्फ, अपग्रेडिंग माई सेल्फ, grow myself, then I'll be able to generate abundance in our life.